Hello friends. Today we are going to learn from Air Commander Kakkar sir of Lakshya Academy about the SSB mantra. I am sure that this is going to benefit a lot to the student community. First of all, I want to welcome sir and thank you sir for sparing his valuable time to benefit the community. Oh, thank you very much for inviting me. Now go ahead and shoot your questions, whatever it is. So my first question, as we all know that all the students are are right now looking for SSB mantra. So can you tell us the mantra? I'm going to thoroughly disappoint you क्योंकि ऐसा तो कोई मंत्र है ही नहीं। ऐसा तो कोई मंत्रा मंत्रा थोड़ी है जिससे जाके एसएसबी में जाके जाओ और जाके क्रैक करके आ जाओ। In fact, there are 15 officer-like qualities which the assessors want to evaluate in you. But in Lakshya Academy, we make it a point not even to talk about those qualities. You know why? Because if the students become very conscious of projecting those qualities, they will sound very artificial, and the assessors there are highly experienced. They will catch them very fast. So instead of benefiting them, this will be counterproductive. This will spoil their chances of selection. So that's why in Lakshya Academy, our primary focus is not on image projection but on self transformation. Okay, sir. Let us forget about the OLQs. Can you please tell us the most important thing that is needed for cracking SSB? Okay. Okay, nutshell. You know what really matters the most? What really matters the most is how you feel within you. अपने आप के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? This one sentence actually has got many things in it. Are you generally very cheerful? Do you feel very enthusiastic in life on the whole? Do you feel that a honest, straightforward person also can be successful without resorting to cheating, dishonest means, or without becoming over clever? Do you ever feel कि मेरी तो किस्मत ही खराब है? Do you get easily upset with failure? Do you feel the world out there is out to cheat you, to exploit you, to take undue advantage of you? In fact, all these things they belong to your belief system, of which sometimes you are not even aware. So in one word, if I have to say, I say, how confident are you of yourself? How confident are you of yourself? If you are confident but otherwise lack in knowledge or skill sets, नॉलेज में कमी है, स्किल सेट्स में कमी है, उस कमी को तो बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। उस कमी को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में ही कमी है, नॉलेज और स्किल सेट ठीक है, बट फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट है, नाउ दैट बिकम्स ए लिटिल मोर ट्रिकी इशू। इन लक्ष्य एकेडमी हम उसका भी कोशिश करते हैं to help you get into a mode of self discovery where you may be able to find out why you have particular belief systems or what were the events in your childhood or something like that which led to a certain belief system. But sometimes uske liye you may have to delve deeper, but that is important. अगर आपकी नॉलेज भी सही है, स्किल सेट भी सही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हैं और फिर भी आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो it needs deeper study in your character, and the need is to change your belief system, of which either you may be altogether
unconscious, not aware of, or the awareness, if at all, there may be very hazy. Fine, sir. You have listed that self-confidence is the most important thing in SSB. So, if a person identifies that he or she has lack of confidence, what he or she can do to make it? Okay, very simple. Lack of confidence is primarily due to two things. In 95% of the cases, it is just due to lack of knowledge. आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं आपके देश में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं आपके गांव में क्या हो रहा है, आपको पता नहीं what are the major problems. You do not know what is UCC, why population control is necessary, what is the collegium system of appointment of High Court or Supreme Court judges, why is the Israel-Hamas conflict taking place, and who's right, who's wrong, what was so between Russia and Ukraine, what is the situation in Pakistan. तो अगर आपको जो दुनियादारी में चल रहा है हर रोज अगर उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, यू विल बी अंडर कॉन्फिडेंट. लेकिन इस लैक ऑफ नॉलेज को तो मेकअप करना बड़ा आसान है भाई, इसको तो डिफिकल्टी है नहीं. उसके लिए मंत्र जो भी कहो दैट इज वेरी सिंपल. रीड, रिफ्लेक्ट, राइट. अगर आप 3 महीने के लिए ये करते हैं, you take some magazine like that competition master और प्रतियोगिता दर्पण, और उसमें आप एक करंट अफेयर्स का आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आप पढ़ें. पढ़ना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्ट. वाइल यू आर रीडिंग समथिंग, आपने अभी उसका 10% पढ़ा, 3 लाइनें पढ़ी, उसको उल्टा करो और दिमाग में सोचो कि मैंने क्या सीखा, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से. फिर पढ़ो. बाय द टाइम व्हेन यू फिनिश, you in your register you take one sheet of paper, उसमें आप लिखिए उसका हेडिंग और उसमें लिखिए 4-5 मेजर पॉइंट्स क्या कवर होके आए, क्या निकल के आए, इन योर ओन लैंग्वेज. हिंदी में लिखिए, नो प्रॉब्लम. कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इज सेकेंडरी, लैंग्वेज कैन बी टेकन केयर ऑफ लेटर. तो आपके पास 4-5 मोटे मोटे पॉइंट निकल के आ जाएंगे. फिर उसको रजिस्टर को उल्टा रखिए और देखिए कैन आई रिकॉल दिस 4-5 पॉइंट्स. मोस्टली होगा 2-3 रह जाएंगे, 2 दिन भूल जाएंगे. तो दोबारा देखो भाई उसको, सी इट अगेन, फिर दोबारा करो. 2-3 बार ऐसे करोगे तो 5 में से 4, 5 में से 5 आ जाएंगे. नेक्स्ट डे व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, पहले वाले टॉपिक में जो देखो कि जो मैंने 5 पॉइंट लिस्ट किए थे वो मेरे याद है. इट मे हैव टू बी काइंड ऑफ इवन automatically you will remember, maybe even mug up. I don't mind doing that. This exercise if you do over a period of 3 months, you will be a changed person. आप खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, this is a guarantee. 6 months ultimate, but 3 months also if you do it. And also जो आपने टॉपिक पढ़ा, आप उसी टॉपिक के ऊपर 2 मिनट की वीडियो बनाइए, अपनी वीडियो, किसी छोटे भाई बहन के साथ में उसकी हेल्प लीजिए और वीडियो बनाइए, उसको बोलिए जो आपने सीखा और फिर अपने आप वो वीडियो देखिए. दिस विल हेल्प यू ट्रांसफॉर्म इन ए सिग्निफिकेंट मैनर. बट रीडिंग, रिफ्लेक्टिंग एंड राइटिंग is very important. Without reflecting and without reading, reading is useless. You are wasting your time. कुछ बच्चे हैं उनको रीडिंग से प्रॉब्लम है. वेल यू कैन सी द यूट्यूब वीडियोस. यूट्यूब वीडियो आधे 15 मिनट की यूट्यूब वीडियो, उसको 2 घंटा लगाइए देखने में. एवरी मिनट, एवरी 5 मिनट्स, what are the major points that the speaker is making? Note down. Take with a pen and pencil, with a paper. Then only, and when the video is over, that time you stop it. What have I learned? Can I recall the major points? So that is important. Without reflecting and without writing whatever you have read, reading becomes useless. तो ये तो मंत्र है अगर लैक ऑफ नॉलेज है.
तो लैक ऑफ नॉलेज तो बड़ा इजीली इसको हम टैकल कर सकते हैं. रीड, रिफ्लेक्ट, राइट. In fact, that famous quote of Francis Bacon, reading maketh a full man, writing maketh a precise man, and speaking makes a ready man. So, जो पढ़ा है उसको लिखना जरूर है, उसको ऊपर रिफ्लेक्ट करना जरूर है, और लिखना जरूर है, और फिर बार बार बार. दूसरा केस 2, जो पहले भी बात किया कि भैया नॉलेज में तो कमी है नहीं है, लेकिन फिर भी अंडर कॉन्फिडेंट है. तो उस केसेस में हम इस लक्ष्य एकेडमी में कोशिश करते हैं कि भाई उस सेल्फ डिस्कवरी, हाउ यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ, how you can discover that some of the wrong belief systems, some of the belief systems which are counterproductive to your success in life, वो कहाँ से आए, and you bring them to the light of consciousness. So it helps you, but this is a very difficult and a long process. So partially only we are successful in Lakshya Academy, but that part also we try to take care. Our emphasis here is primarily on transformation, self-transformation, and not on image projection. So I feel this can help the students a lot. Thank you, sir, for giving us this much of information about SSP. I'm sure that students are going to get benefit from this. No, thank you very much. All the very best. I wish the students a lot of luck and Godspeed. Thank you.